Today we discuss about the transconductance amplifier, and the transconductance amplifiers are not discussed, and I already discussed that your current amplifiers, your voltage amplifiers, your trans resistance amplifiers. In this lectures we discuss about the transconductance amplifier. This word is very familiar. आप लोग इस वर्ड से काफ़ी फैमिलियर होंगे. That word is called as conductance. Conductance is the reciprocal of the resistance. Conductance is the reciprocal of the resistance is conductance. So what is resistance? Resistance is basically it is the ratio of voltage by current, and the conductance is the reciprocal of resistance, so current by voltage. I already discussed the word is trans. Trans मैंने already आपको पहले discuss कर चुके हैं. Transconductance means it relate between the input and output. Input and output के बीच में relation generate करता है. तो it is the ratio of output current to the input voltage. क्या होता है transconductance? It is the ratio of output current to the input voltage. तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है, इनवर्स है, तो आउटपुट करंट डिवाइड बाय द इनपुट वोल्टेज. तो दिस इज योर आई आउटपुट डिवाइड बाय द वी इनपुट. ओके, एंड द यूनिट इज योर मो या सीमेंस. यूनिट इसका क्या होता है? मो या सीमेंस इज द यूनिट ऑफ योर ट्रांसकंडक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय जीटी. And it is denoted by GT, Transconductance. Transconductance is denoted by capital G and the suffix T. It is for the transconductance. So basically transconductance, it is the ratio of output current to the input voltage. तो अब देखिए क्या है, आउटपुट साइड में आपका क्या है? करंट है. इनपुट साइड में आपका क्या है? वोल्टेज है. तो इनपुट साइड में आप क्या सप्लाई दे रहे हैं? वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं. और आउटपुट में आप क्या फाइंड कर रहे हैं? करंट फाइंड कर रहे हैं. तो इनपुट में जब आप वोल्टेज देंगे तो कनेक्शन कैसा होगा? सीरीज कनेक्शन होगा. और आउटपुट में अगर आपका करंट मिल रहा है तो करंट जब आउटपुट में मिल रहा है तो देयर इज एन पैरेलल कनेक्शन. नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम of your transconductance amplifier. See, in the input side आप देख रहे हैं, this is your input side. In this input side आप देख रहे हैं कि आपका input side में क्या है? सीरीज कनेक्शन है. और जब आप आउटपुट साइड में देख रहे हैं, this is the output side, तो आप आउटपुट साइड में देख रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो किस तरह का कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन है. ओके, इन द इनपुट, क्योंकि इनपुट साइड में सीरीज में इसलिए है क्योंकि आप वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं. आउटपुट साइड में पैरेलल कनेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको आउटपुट पे करंट फाइंड करना है. ठीक है. नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इनपुट वोल्टेज, क्योंकि आपका आउटपुट करंट, सी इन दिस क्वेश्चंस, योर आउटपुट करंट विल डिपेंड ऑन द इनपुट वोल्टेज. देखिए, अब सी आउटपुट जो आपका करंट है, दिस आउटपुट करंट इज नथिंग कैन बी GT into VI. It means that your output current is depend on the input voltage VI. आपके इनपुट वोल्टेज VI पर डिपेंड कर रहा है. ओके, ना तो सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे? इनपुट साइड से इनपुट वोल्टेज. और इनपुट वोल्टेज हम देख रहे हैं VI हमारा कहाँ पर है? सी इन दिस फिगर, दिस इज द इनपुट वोल्टेज VI. ओके, ना जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखिए, I of I into RS प्लस दिस इनपुट करंट II into RI इक्वल टू VS. आप क्या लिखते थे? थोड़ा सा मैं और, माइनस ऑफ VS इज इक्वल टू 0. ओके, अब VS को 0 राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो I of I अगर आप दोनों में से कॉमन ले लें, दिस
आई ऑफ आई और ये ऑफ आई को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है, आर एस इंटू आर आई इज इक्वल टू वी एस। देन आप लिख सकते हैं आई ऑफ आई इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस प्लस आर आई। सी इन दिस फिगर। ओके, आपने इसको डिनोमिनेटर साइड में कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज वोल्टेज वी आई? नाउ वी रिटन एज वी आई इज इक्वल टू करंट आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ आर आई। यही होता है वोल्टेज का फॉर्मूला, यही होता है। और आर आई ऑफ आई इज ऑलरेडी फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन 1 we written as vs upon is written rs plus ri into of ri. See, this is the equation number 2. Okay, this is the equation number 2. Vi is equal to vs upon rs plus ri into ri, and this is the input voltage at the input terminal. Okay, now, so now the equation 2 is find out what is the input voltage. Next we find the output voltage. Now in the output voltage we see in the figure, आप figure देखेंगे तो it look like this. This is the current. Now there is an resistance, and now there is a resistance of RL, R naught, moving this current I naught, and this is GT into V. And now this is the output side, output terminal across the load. This is output. Now we know this node voltage, because this node voltage is V naught, so the node is common. This node voltage is V naught, and this part is your grounded. You see in the circuit diagram of transconductor. I will only the output part. Now by apply the nodal analysis, now apply the nodal analysis at the output side, we find that V naught minus 0 upon R naught for this equation plus V naught minus 0 divided by RL for this expression, this load across. Now the this the जिस नोड को आप मानते हैं वो नोड एज ए डोमिनेंट नोड मानते हैं, तो now the direction of current is in this direction, but the direction of current is in this direction, so the direction is opposite, then GT minus of VI is equal to 0. Now we find the what is V naught. We find V naught is, get the LCM, RL into R naught upon RL, R naught into RL is equal to GT into VI. Okay, you understand? Now I erase this thing already written. Now, and we conclude this V naught is equal to GT into VI into this R naught is go in this direction, R naught into RL upon RL plus R naught, and this is equation 3. मैंने इसको इस डायरेक्शन में और इसको यहाँ पर कर दिए तो फाइंड आउट कर लिए V नॉट. नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, आउटपुट करंट. तो आउटपुट करंट क्या होगा, भी आउटपुट करंट V नॉट is equal to I naught into RL. Now the I naught is equal to
I naught is equal to, sorry, now the I naught is equal to, now the I naught is equal to V naught divided by RL. So this is the expression. Now put the value of V naught from equation 3. Put the value of V naught from equation 3. Now the we get, क्या होगा, अब हम इसमें पुट करेंगे तो then I naught is equal to, then I naught is equal to, then put this value and get this GT VI into R naught upon R naught plus RL, and this is the equation 4. Now we find the output current and we find the input voltage. Now write down the equation 2 and equation 4. इक्वेशन 2 आपका क्या था, इनपुट वोल्टेज VI इज इक्वल टू VS इंटू RI इंटू RI प्लस RS, ठीक है। इन द आइडियल कंडीशन हमारा क्या होता है, द ऑल सप्लाई वोल्टेज विल ट्रांसफर टू द इनपुट साइड। तो व्हाट आर द कंडीशन, इफ input resistance is equal to infinity for ideal condition, then 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 Vi, then your Vi is equal to Vs. This is the condition when input resistance is infinity. Now second conditions for the output side. Now in the output side I written आउटपुट साइड में क्या होगा, व्हाट आर द इक्वेशन नंबर 4, I naught is equal to GT into Vi into R naught divided by R naught plus RL. This is the equation, see in the equation number 4. And how the total gain, this GT into Vi is equal to I naught. The condition is that this I output resistance is equal to infinity. If the output resistance is equal to infinity, if the output impedance is equal to infinity, now we see that this output current I naught is equal to GT into Vi. It means that in the transconductance, for the ideal condition, input impedance is infinity and output impedance is also infinity. Now, so in ideal condition, in ideal
इन आइडियल कंडीशन क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस in ideal condition your input impedance or या input resistance is equal to 0 ohm. So oh, it's my mistake. So input impedance is equal to infinity and output resistance is equal to infinity. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर आइडियल कंडीशन जब हम बात करेंगे ट्रांसकंडक्टेंस की, तो इनपुट रेजिस्टेंस आपका इन्फिनिटी होगा और आउटपुट रेजिस्टेंस इज आल्सो इन्फिनिटी। सी अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि यह किस तरह का होगा। सी इन दिस फिगर, सॉरी, सी इन दिस सर्किट डायग्राम। नाउ इन द सर्किट डायग्राम I erase all terms. No. Now in circuit diagram we see this is your current source, and that current source is controlled by the input voltage. That current source is controlled by the voltage, so its name is voltage controlled. So its name is voltage controlled करंट सोर्स। क्योंकि वोल्टेज क्या कर रहा है, इस करंट सोर्स को देखिए, इस तरह समझिए, यह आपका करंट सोर्स, दिस इज योर करंट सोर्स एंड दैट करंट सोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द वोल्टेज। दिस करंट सोर्स, ये जो आपका करंट सोर्स है, इसको कंट्रोल्ड कौन कर रहा है, वोल्टेज सोर्स। तो इट इज कॉल्ड एज योर वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, हम लोग एक वर्ड, एक चीज और इसको लिखते हैं। अब देखिए इनपुट साइड में किस तरह का कनेक्शन है, सीरीज है। आउटपुट साइड में किस तरह का कनेक्शन है, पैरेलल है। तो अनदर नेम इज सीरीज शंट, क्योंकि इन द इनपुट साइड इट इज सीरीज, आउटपुट साइड में पैरेलल, तो पैरेलल को हम लोग शंट कहते हैं। इट इज सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो इट्स अनदर नेम इज सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। The best example, you understand, because the input side is series and the output sides are parallel, the parallel name is shunt, तो it is a series shunt feedback amplifier। अगर आप वोल्टेज एम्पलीफायर को देखेंगे तो वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या था, दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों कनेक्शन आपका सीरीज कनेक्शन था, तो उसको हम कह सकते थे सीरीज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। अगर आप करंट एम्पलीफायर को देखेंगे तो करंट एम्पलीफायर में इनपुट भी आपका पैरेलल कनेक्शन था और आउटपुट भी आपका पैरेलल कनेक्शन था, तो इसको हम लोग कहेंगे शंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, अगर आप ट्रांस रेजिस्टेंस को देखेंगे तो ट्रांस रेजिस्टेंस में इनपुट साइड में पैरेलल कनेक्शन था, आउटपुट साइड में सीरीज कनेक्शन था, तो क्या होगा, शंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो दिस इज द वे टू रिटन द नेम। ओके, अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर योर voltage controlled current source is your MOSFET। MOSFET is the best example of your voltage controlled current source। MOSFET is the best example of your voltage controlled current source। So this is the lectures we
understand about the four ideal type of amplifier. One is your voltage amplifiers, another is your current amplifiers, trans resistance amplifier, and transconductance amplifiers. Your first unit is completed, and the small point is your distortions. Basically, distortion is nothing, can be the unwanted informations are introduced to your original informations and create a create a distortions. So that is your distortion signal, मतलब unwanted signals are introduced into your original signals and your original signals will be changed. So that is your distortions, and basically the distortions is your amplitude distortions, phase distortions, and frequency distortions. And the amplitude distortion, सपोज वी अप्लाई सिग्नल, हम एक इनपुट में सिग्नल अप्लाई कर, सपोज हम एक माइक में मान लीजिए कि आप कुछ बोलते हैं और माइक क्या करता है कि उस सिग्नल को सिस्टम से पास करता है, दैट इज़ योर इनपुट सिग्नल माइक का जो होता है वो ट्रांसमिट करता है, और जब वो ट्रांसमिट करता है तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड से ट्रांसमिट करता है, और जो डिफरेंट एम्पलीट्यूड से ट्रांसमिट करता है तो हम कह सकते हैं कि योर इनपुट सिग्नल is not equal to the output signal. There is an amplitudes are changes. So this amplitudes are changing. This is your amplitude distortion, and the frequencies are changed. That is frequency distortion, and the phase are changes. This is the due to delay, due to advance, and that is the reason